Good morning, class. Today's topic is Kangra School. This is sub school of Hill School or Pahadi style, and uh, it was a major center of this style. Means Pahadi style. Let's start. Time period of Kangra School, 18th century. Origin and development. Katod dynasty contributed significantly to the origin and development of कांगड़ा स्टाइल. कांगड़ा स्टाइल का बेसिकली जो उद्भव हुआ था वो कटोच डायनेस्टी था, उनके द्वारा हुआ था. फाउंडर राजा घमंड चंद वॉज द फाउंडर ऑफ कांगड़ा स्टाइल. गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा स्कूल. राजा संसार चंद era time is known as golden period of Kangra style. Main center of Kangra school: Tira, Sujanpur, Guler, Noorpur, Nadon were the main center of Kangra school. बेसिकली जो कांगड़ा स्कूल है वो बेस किस पे थी? जो ये गुलेर जो रीजन था, जो गुलेर सेंटर था, वहीं के बेसिकली आर्टिस्ट आगे जाके कांगड़ा स्कूल के आर्टिस्ट कहलाए थे. क्योंकि कांगड़ा स्कूल का जो ओरिजिन डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग हुआ था वो गुलेर में हुआ था, और वहाँ के आर्टिस्ट आगे जा कर के जो कांगड़ा रीजन में जब वो इस्टेब्लिश हुए तो वहाँ पे उन्होंने नई स्टाइल क्रिएट की जिसे कांगड़ा स्टाइल बोला गया. नेक्स्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ कांगड़ा स्टाइल: फत्तू, परखू, कुशन लाल, जिसे कुशाला भी बोलते हैं, नैनसुख एंड हिज फैमिली पेंटर्स आर द मेजर आर्टिस्ट ऑफ दिस स्टाइल. नोट एक कोटेशन है, देखिए इसको. अकॉर्डिंग टू वचस्पति गोरिल्ला, the painting of Kangra style are miniature of its wall painting. कई बार कोटेशन आता है और बेसिकली जो आपका जो हिल पहाड़ी स्टाइल है उसमें एक दो कोटेशन ऐसे आ रखे हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है. वैसे कोटेशन वाला अभी तक क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आपके जो एक्सरसाइज वगैरह है उनमें आ रखा है, तो मीन फिर भी आने की चांसेस होते हैं इनके, इसलिए मैंने कोटेशन भी लिखे हैं आपके. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाचस्पति गोरिल्ला, द पेंटिंग्स ऑफ कांगड़ा स्टाइल आर द मिनीचर ऑफ इट्स वॉल पेंटिंग. जो कांगड़ा स्टाइल की जितनी पेंटिंग्स हैं वो क्या है? वॉल पेंटिंग की मिनीचर, छोटा रूप है उनका. एंड सेकेंड कोटेशन इज English traveler Moorcraft written in his memoir संस्मरण में लिखा है that Raja Sansar Chand loved paintings very much. Many painters were working in his court. He had a large collection of paintings. Main feature of Kangra school, ये main characteristics of Kangra school. First, subject matter or theme: religious, mythological, literature, shringar, romantic, love, music, seasons were the main theme of this style. Kangra rulers were the follower of Vaishnav sect, so influenced by Bhakti and Riti literature. Radha and Krishna as a heroine, Nayika and hero Nayak were painted in this style. Instead of Ramayana, Mahabharata,
हमीर हट, नल दमयंती, बिहारी ससई, रसिक प्रिया, नल दमयंती, शिव पार्वती, etc. have been also depicted in this style. Court scenes, royal family paintings, portrait paintings also depicted here. बारामासा, राग रागिनी, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेदा, रागमाला also depicted in this school. Basically, you have noticed that all over Pahadi school theme and Rajasthani school theme are same. A little bit different in between styles. Otherwise, they they both styles have same subject matter and theme. Clear? Second, color scheme. Primary colors, bright colors used here. Golden and silver color also used here. Light dark shade and Sufiana effect. Light dark shade and Sufiana effect have been shown due to Mughal effect. Depiction of nature. Nature have been depicted symbolically, lively and unique depiction of nature and all the seasons like full moon night, rainy seasons, dark clouds with lightning, mountains, forests were beautifully depicted in this style. Human figures in this style, the beauty of the man and woman is presented with the idol. The woman is depicted in round faces, big arched, जिसे धनुषाकार बोलते हैं, एंड सोलफुल आइज, धनुषाकार और सोलफुल आइज बनाई गई हैं. स्लिम बॉडी विद वेरियस पोस्चर. मैन वॉज डिपिक्टेड एज ग्लैनेट gallant and just like a Rajasthani style. Borders and margins. Borders have been depicted similar to Basoli style, which are made of red and yellow color with flat, thin and brush shape, bar shaped. पट्टी नुमा बनाया गया उनको. Script same as Basoli style. Here also written a Takri script on the margins. Animals, birds and animal depiction. Birds and animals are characterized by human emotions such that they are depicted as pair to show love and the same time depicted be lonely to show dis disconnection or विरह इन दिस स्टाइल. लाइक जहाँ पे पक्षियों को युगल में बनाया गया है, जोड़े में बनाया गया है, पेयर में बनाया गया है, वहाँ पे लव को, रोमांस को क्रिएट किया गया है. और जहाँ पे पक्षियों को अकेला या उनको केज में बंद किया हुआ, पिंजरे में बंद किया हुआ डिपिक्ट किया गया है, वहाँ उसे विरह में या डिसकनेक्ट मतलब सेपरेटेड बनाया गया, उनको सेपरेशन दिखाया गया है. स्वान, डक, peacock, parrot, deer, cow, etc. are the mostly depicted in this style. Depiction of musical instrument, and this is the most important feature of this style. Musical instrument. इससे पहले किसी भी स्टाइल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए गए हैं. The musical instrument have been depicted content usually and harmoniously. यहाँ पे आपका कांगड़ा स्टाइल कंप्लीटेड है. एंड इसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स
of Pahadi school. A common characteristics of Pahadi school. All over basically आपके जितने भी सब स्कूल हैं उन सबको मिला करके जो पहाड़ी स्कूल जो बनता है उसके आधार पे एक कॉमन जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं. फर्स्ट, सब्जेक्ट मैटर और थीम. Subject matter or theme basically depend on religious, literature, love and romance, court and other mean court based. Let's see. Religious theme: Bhagavad Puran, Ramayana, Durga Saptati, Mahabharat, devotional of Radha Krishna, etc. What painted. Literature based painting: Bhakti and Riti literature like Ras Manjari. It was written by Bhanudat. Geet Govind. It was written by Jaydev. Bihari Sassai, Bihari Lal, Nayak Nayika Bheda, etc. were depicted here. Love and romance theme. In this style, mostly Radha Krishna's love and romance were depicted here. Ragmala and Baramasa were based on music and 12 months and seasons related to romantic theme. Court scenes and other theme. Court scenes were also painted in Pahadi school, whereas hunting scenes, court celebrations, portrait of rulers and royals, and uh, painting of Sarah Lysius were also depicted here. मतलब रानियों के हरम को और उनको भी बनाया गया है. बेसिकली जो अलग से जो महल पैलेस होता था उनको भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है. सेकेंडली, कलर स्कीम. ब्राइट एंड नेचुरल कलर विद contrast have been used here, and colors have been used symbolically. Golden silver color also used in पहाड़ी स्कूल. मतलब कलर्स को सिंबल वाइज उनको डिपिक्ट किया गया है. मतलब किसी न किसी का सिंबल, जैसे रेड कलर एंगर का, उसके अलावा शौर्य का, साहस का, करेज का सिंबल होता है. वैसे ही अदर्स कलर्स को भी ऐसे ही सिंबल वाइज डिपिक्ट किया गया है. डिपिक्शन ऑफ नेचर. ऑल द सीजन्स, क्लाउड्स, रेनी सीजन विद लाइटनिंग and dark clouds, dancing peacock, dense forest, mountains, valley, rivers, lakes, full moon night, evening and morning scenes were beautifully depicted in this style. Human figures, they are well proportioned, sloping forehead, high nose, lotus shaped eyes, round cheek, thin rosy lips, profile faces with almond complexion of human figures have been depicted. Costumes: male have been draped white pajama, backward slanting turbans due to Mughaliya effect influence. Women have been dressed up with ghagra choli and transparent dupatta. Krishna has been depicted in yellow pitambari dhoti with peacock feather in his crown. Next, border and margins. Border have been depicted in red yellow color. Mostly borders are flat. There are writing in Takri script on the margins in Pahadi school. Faces. The faces are mostly एक चश्म or profile faces depicted, and at times डेढ़ चश्म means 1.5 eye pose have been also depicted. Next, depiction of instruments. Musical instrument like tanpura, dholak, mridang, manjira, veena and sitar also have been depicted in Pahadi school. Liner beauty, rhythmic and smooth lines like Ajanta
like expression and emotion, jewelry, and other details are also praiseworthy. Next and last characteristics of this style: use of light and dark shades. In Pahadi school, light dark shade were used in paintings. Light colors used, light and dark tones used for dark shades. And this is your complete your uh, chapter number 4 completely.